बहुत लंबा सफ़र तय करा सकते हो। तो उनके पास उन्होंने समझा इस चीज़ को। हमारे यहाँ पे जो शुरू से मिल गया अंग्रेज़ों से बना हुआ, बस वो मिल गया तो मिल गया। उन्हीं ट्रेनों को थोड़ा बेहतर किया, नहीं किया, थोड़ा बेहतर किया, नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियन रेलवे से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है WION वाइड एंगल, इंडियन रेलवेज 170 ईयर्स एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग। 170 ईयर्स ही लिखा है ना? बहुत ओह माय गॉड। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस होटलने निर्धारित समय पर चल रही थी। கன்னியாகுமரி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் 6வது பிளாட்ஃபாரத்திலிருந்து 5:15 நிமிடத்திற்கு புறப்படும். हावड़ा जम्मूदाई रेलवे एक्सप्रेस सकाळी 8:35 चालू. Indian Railways. It's been dubbed the lifeline of the nation. From its conceptualization by the British in the mid-19th century to becoming one of the world's largest railway networks, it's a system that has withstood the test of time. In a country of 1.3 billion, Indian Railways is a huge and complex entity. Spread across more than 65,000 kilometers, it ferries nearly 23 million passengers per day in over 13,000 passenger trains. It is also one of the largest employers in the world, with a workforce of nearly 1.3 million. On this Independence Day, let's track the magnificent journey of the Indian Railways. The history of railways in India dates back to 1853. On the 16th of April 1853, the first passenger train ran between Bombay's Boribunder, which is now called Mumbai CST, and Thane. Covering a short distance of 34 kilometers, it was operated by 3 locomotives named Sahib, Sultan and Sindh, and had 14 carriages. Since then, there's been no looking back. Indian Railways have come to define and shape the country. But it started off as a byproduct of British colonial rule. Indian Railways has been called the greatest gift left by the colonial power. However, they were not built to serve the needs of local people. The railways were an instrument of control. The British needed it to move troops around quickly. The construction of the railway network was envisaged by Lord Dalhousie. It took off in earnest after the First War of Independence in 1857. Which the British refer to as the Indian Rebellion of 1857. The railways helped British imports and exports, bringing in immense economic benefits, but they also served many Indian freedom fighters. It helped mobilize people against the British Raj. Trains in British India had 4 classes: first, second, third and fourth.
A journey by train made Indians realize that they were second or third class citizens in their own country. Remember, in 1893, Gandhi was thrown off a South African train when he was traveling in the first-class whites-only compartment for refusing to give up his seat. Just move your black back to third class. The railways proved to be a blessing in disguise. We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. On August 15th, 1947, India won its independence from the British. The Indian Railways played a crucial role in the independence struggle, and also in this dark side of Indian history. After 200 years in India, when the British finally left, the subcontinent was partitioned into two independent nation-states, India and Pakistan. Almost overnight, approximately 7 million Hindus and Sikhs and 7 million Muslims found themselves in the wrong country. 14 million people had to abandon their homes. It is estimated that nearly 700,000 refugees traveled by train between the 15th of August and the 8th of September in 1947 alone. The journey was cramped and fraught with danger. Both passenger and goods trains were used to meet the demand. Every inch of space that was available was utilized by desperate passengers. Trains carrying refugees were attacked by mobs en route. They arrived full of corpses. These were called ghost trains. It is the bloody legacy of the Indian partition. In 1950, India's rail network was about 53,596 route kilometers. The government began reorganizing the network into zones. Division was important for better administration and control. Later on, Indian Railways was divided into 17 zones and 69 divisions. To keep Indian Railways on track
annual budgets were made. Though India's first railway budget was introduced in 1924, John Mathai presented the first railway budget for independent India on the 20th of November 1947. The railway started the process of modernization. Colonial-era locomotives were replaced with state-of-the-art trains. The 1980s saw a complete phase-out of steam locomotives. Electrification was spurred on by the 1970s energy crisis. Between 1980 and 1990, around 4,500 kilometers of track was electrified. India also got its first metro system, which opened in Calcutta in 1984. The 1980s also brought in a whole new world of computers. It was a turning point. In 1986, the Indian Railways online passenger reservation system was introduced. It allowed customers to book and cancel tickets on any train from any terminal. 14 years later, in 1999, IRCTC, the Indian Railway Catering and Tourism Corporation, was launched. It pioneered internet-based rail ticket booking through its website, as well as from mobile phones via Wi-Fi, GPRS or SMS. On the 1st of April 2015, IRCTC created a new national record. 1,345,496 tickets were booked in a single day. The reason? A new rule came into force. Passengers were now allowed to book tickets 120 days in advance rather than 60 days. IRCTC was also listed on the National Stock Exchange in 2019. The Government of India's holding was reduced to 87%, with the remaining shares being publicly traded. In India, the experience of a train journey is unique. Perhaps some rail journeys are more beautiful than the destinations themselves, like the Konkan Railway route, which takes you through gorgeous cliffs, marshes, plateaus and hills, through the states of Maharashtra, Goa and Karnataka. It's an astounding feat of engineering. The British had contemplated and abandoned the plan as being too formidable. But Indian engineers managed to build it in 8 years. Konkan Railway was formed in 1990 as a company. The first passenger train ran on Konkan Railway tracks in March 1993. During its initial years of operations in the mountainous region, a spate of accidents took place. It prompted Konkan Railways to investigate new technologies like the Sky Bus Metro system and an anti-collision device. Today, the Konkan Railway lines span 738 kilometers. Another engineering marvel is this. The Chenab Bridge is the world's highest railway bridge.
When completed, the bridge will span the Chenab River at a height of 359 meters above the river. For reference, it is 35 meters higher than the Eiffel Tower. Located in Jammu and Kashmir's Reasi district, it is expected to open to rail traffic in December 2022. Now let's talk about some of the premium trains in India. The first one on our list is the Rajdhani Express. In English, the word means capital, just as the name suggests. Rajdhani Express is a series of trains that connects all major cities in India with the national capital. The first train in this series was introduced in 1969, which ran between New Delhi and Howrah. The name Shatabdi means centenary in Sanskrit. Introduced in 1988, the Shatabdi Express was launched to commemorate the birth centenary of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Some of the other premium trains in India include the Garib Rath Express, the Toronto Express, and the Humsafar Express. Indian Railways has also introduced some semi-high-speed trains. Launched in 2016, the Gatiman Express became the fastest train in India, beating the Shatabdi Express. With an operating speed of 160 kilometers per hour, it covers the distance between New Delhi to Agra in just 105 minutes. Among the fastest trains in India today is the self-propelled Vande Bharat Express. Operating at a speed of 160 kilometers per hour, it is a semi-high-speed train set. Vande Bharat trains do not require an engine. Instead, they use a distributed traction power system, which gives the train higher acceleration and deceleration compared to loco-hauled trains. The train is expected to run at speeds of 220 kilometers per hour by 2025. It's been built under the Make in India initiative. The first version of the Vande Bharat trains was launched in 2019. 400 such trains have been proposed by the Indian government. Another semi-high-speed Indian train is the Tejas Express. It is Indian Railways' first experiment with privatization. Tejas Express is run by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation, an arm of the railways. Last year, the first station to be developed under a public-private partnership was also inaugurated. The Rani Kamalapati railway station is located in Madhya Pradesh. To upgrade the country's railway system, the Narendra Modi-led government has laid the roadmap for long-term partnerships with the private sector. It has identified 109 busy routes across India to run 151 private trains for 35 years. It may sound like a lot, but the 151 trains represent only around 5% of total trains run in India. Indian Railways, be it trains or stations, are synonymous with hustle and bustle. They can overwhelm all your senses, but like the country, the trains too are ruled by contrasts. The Palace on Wheels is the epitome of luxury. It was launched by the Indian Railways Association with Rajasthan Tourism Development Corporation, launched in 1982. It transports you to a bygone era of old world charm and royalty. It's a draw for tourists around the world.
India is now gearing up for its first ever bullet train. The Japan-backed Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor is under construction. The train will be run between the two cities at a speed of 320 km per hour, covering a distance of about 500 kilometers in about 2 hours. Speeding up of trains is a constant endeavor. Indian Railway is also constructing more than 3,000 kilometers of dedicated freight corridor, which would enable freight trains to run at a speed of 100 kilometers per hour. On the 16th of April 2022, Indian Railways entered its 170th year of service. It faces many challenges, upgrading its aging infrastructure, enhancing its quality of service. The speed of transformation may need to be accelerated, but it's on track and going strong. जी जनाब। बहुत बड़ा। अच्छा, कोई एक ऐसी ट्रेन बताइए जिसका नाम आपने पहले नहीं सुना था। वो थी ना एक कौन नहीं बोलिएगा, उसका सुना था। कौन का तो सुना था, और एक थी ना अभी शताब्दी सुना था, वंदे भारत सुना है, मिस्टर डॉन सुना है, महाराजा, रॉयल्टी सुना था, देखा महाराजा राजा, और भी बड़ी ट्रेन है टूरिज्म के हवाले से जो मतलब यहाँ नहीं थी। वंदे भारत एक वो भी थी ना, एक सेकेंड, यात्रा एक कौन सी यात्रा थी? केदारनाथ? नहीं, यात्रा एक ट्रेन थी जिसमें यात्रा कराई गई थी, जिसके अंदर वो उनकी राम की जन्म रामायण। हाँ, वो नहीं थी इसमें। अच्छा, वैसे तो और भी बहुत सारी ट्रेन्स हैं, तेजाज बड़ी फेमस है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि 170 साल का जो अरसा है वो मैंने घूम लिया, मैंने पूरा इंडियन रेलवे देख लिया। मुझे किस तरह से डेवलप बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ पता चला। इब्तिदा कहाँ से हुआ एग्जैक्टली मैं ये सोचा करती थी कि यार ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। इतना बड़ा नेटवर्क है जो अब मेट्रो का हम देखते हैं, रेलवे का देखते हैं, तो यानी अपनी इब्तिदा की कहाँ से थी। तो जी एग्जैक्टली मुझे जवाब मिला 1853, ठीक है, जो बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा हमें वक्त में। और 1853 से जब इब्तिदा हुई थी उसके बाद भी इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। एक ट्रेन चल गई थी। अच्छा, मुंबई से थाने सिटी, ये भूलने वाली बात नहीं है, याद रखना है, पहली ट्रेन मुंबई से थाने गई थी। अच्छा, उसके बाद भी ज़्यादा खास काम नहीं हुआ। उसके बाद जो सही काम हुआ, जो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, यूपीएससी में एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आपने देखा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे कुछ ना मिनिस्टर बन जाऊँगी मैं भी कहीं ना कहीं की। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो ज़्यादा काम होता हुआ मुझे दिखा और मुझे एक ये कह सकते हैं रेवोल्यूशन आया, जो एक इनकलाब आया, वो मुझे लग रहा है कि आज़ादी के भी बाद 1950 के बाद बहुत मुझे ऐसा लगा कि काम बाद हुआ। और बहुत ज़्यादा जो एकदम तब्दीली आई थी वो 85 के बाद, 85 बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू। मैं एक बात पहले तो बिल्कुल मुझे हैरत हुई इस बात पे जब वो इंटरनेट के थ्रू बुकिंग कर रहे थे, यानी कि वो बता रहे हैं 1997 की बात बता रहे हैं, 1993 आई थिंक बताया कि 1999 बताया, 90s की बात है। आप यकीन करें 2000 के भी तो बाद, बहुत बाद में हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स आए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब हम कितने पीछे थे। वो तो 90s में इंटरनेट के थ्रू बुकिंग हो रही है, इंटरनेट के बहुत सारे काम हो रहे हैं उनके। इस चीज़ में तो कोई भी दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ हर चीज़ लेट हुई है। मैं समझी 5 साल 7 साल, मुझे नहीं पता, काफ़ी लंबा अरसा है। नहीं, हम बहुत सी चीज़ों में लेट हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी देर के लिए मैं ये वीडियो देखते हुए ये सोच रहा था, ये तो सारी वीडियो डिटेल से है, इसमें कब किस तरीके से है, और अब जो है बुलेट, और फिर उसके बाद अच्छा सेमी हाई स्पीड भी बहुत सारी आ गई है। वंदे भारत एक चीज़ मुझे, और पहले भी हमें पता था कि फास्टेस्ट ट्रेन है, लेकिन इंडिया की मोस्ट फास्टेस्ट ट्रेन में वंदे भारत है नंबर 1 पे, और वो भी मेक इन इंडिया, प्योर मेक इन इंडिया। बिल्कुल, बहुत, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि खुद से कहीं से इंपोर्ट नहीं किया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे हाई स्पीड हो रही है मैं बुलेट ट्रेन की, फिर हाइपर लूप तक की बात हो रही है, तो अगर देखा जाए कहाँ से कहाँ तक की कहानी मुसलसल आगे बढ़ रही है। मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करते हैं कि अगर ब्रिटिश यहाँ आए नहीं होते,
और ये रेलवे का सिस्टम यहाँ होता ही नहीं, तो क्या ये हो चुका होता? अब तक तो हो चुका होता। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे क्या लगता है, मैं बिल्कुल आपको सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में नहीं हुआ होता। पाकिस्तान में तो नहीं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। अगर ब्रिटिश ने पूरे हिंदुस्तान में, ये जो ट्रेनों की जो कहानी चल रही है ना, ये पूरे पाकिस्तान और इंडिया के मिला के चल रही है, लेकिन उसके बाद जो है जब आज़ादी हो गई तो फिर इंडिया का हमने देखा इसमें। लेकिन स्टार्टिंग जो 1800 ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा उस टाइम पे जो ट्रेन का जाल बिछा वो पूरे हिंदुस्तान में बिछा। मैं एक बात और सोच रही हूँ, ड्यूरिंग द वीडियो भी सोच रही थी और अभी भी सोच रही हूँ कि क्योंकि पार्टीशन से पहले की बात है, 1853 पार्टीशन से पहले की बात है, और जब सब साथ थे, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब साथ में रहा करते थे, तो उस वक्त कुछ पता नहीं था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब पार्टीशन हुआ और उसके बाद 1950 से उन्होंने एक रफ्तार के साथ तरक्की करना शुरू किया। उन्होंने मेट्रो, अच्छा नई पहली मेट्रो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, रेलवे थी, मेट्रो नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरफ इस खित्ते में हमारे साइड पे मेट्रो का और इन चीज़ों का रुझान क्यों नहीं हुआ है? क्या हमें पसंद नहीं था या हमें गाइड नहीं मिला? असल में हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ थोड़े छोटे बजट के प्रोजेक्ट हुए हैं। कौन से वाले? ग्रीन लाइन वगैरह। कौन से वाले हुए हैं? हमने ज़्यादातर रोड पे डिपेंड किया, लेकिन आने वाली दुनिया, समझदार दुनिया को पटरी की अहमियत पता है। क्या आप इस पे बहुत तेज़ी से चल सकते हो, आप इस पे ट्रेनें चला सकते हो, आप इस पे ज़्यादा पैसेंजर बिठा सकते हो, आप इस पे कम कॉस्ट पे बहुत लंबा सफ़र तय करा सकते हो। तो उनके पास, उन्होंने समझा इस चीज़ को। हमारे यहाँ पे जो शुरू से मिल गया अंग्रेज़ों से बना हुआ, बस वो मिल गया तो मिल गया। उन्हीं ट्रेनों को थोड़ा बेहतर किया, नहीं किया, थोड़ा बेहतर किया, नहीं किया, मेंटेन किया, नहीं किया, डीजल पे ले आए स्टीम इंजन के बाद। लेकिन हमारे यहाँ पे नई पटरियाँ, नया सिस्टम, रेलवे सिस्टम, नए ट्रैक बनाना, इस तरफ फोकस नहीं हुआ। अगर हुआ भी सही तो रोड बने हैं कुछ, ताकि गाड़ियाँ आना जाना गाड़ियों का हो, ट्रैफिक का हो। इस तरफ हमारे यहाँ मेट्रो की तरफ और इस तरफ तवज्जो नहीं हुई। अच्छा, मैं अगर सिस्टम को देखूँ, मेट्रो सिस्टम को ले लें, अगर उनके सिर्फ मेट्रो को ही ले लें, शायद 10% भी नहीं है ना? अगर हम आवाज़ में करें तो 10% भी नहीं होगा। हमारे यहाँ जो कराची शहर के अंदर ही चलता था ना ट्रेन, वो तक बंद हो गई। मुसाफिर में ऐसे बंद हो गई कि वो जो पटरियाँ, उनके ऊपर घर बन गए, आबादियाँ बन गई। अब दोबारा से ये सुनने में आ रहा है सफाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, मैंने तो बकायदा रोड्स के ऊपर पटरियाँ, मतलब ऐसा लग रहा है रोड बाद में बना दी हुई है और वो पटरियाँ नीचे से दिख रही हैं, बकायदा विजिबल हो रही हैं। क्योंकि जब ट्रेन सिस्टम अंग्रेज़ों का बना था ना, तो उन्होंने बकायदा, ये तो आबादी तो नहीं थी, लेकिन अब जब आबादी बनने लगी तो वो एक शहर के बीच में एक और ट्रेन चलती थी, ट्राम, जो भी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताया कि कोलकाता में अभी भी चलता है ट्राम, अभी भी ट्राम चलता है। छोटी सी बस से पटरी पे चलती है, कच्चे रोड होते हैं जहाँ पर। लेकिन ये है कि कराची में ये सारा बंदों के ऊपर से सड़कें बन गई, घर बन गए। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये जुमला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, चाहे हम जितनी गालियाँ दें, ये गिफ्ट ब्रिटिश की तरफ से मिला, इस पर कोई मतलब दो राय नहीं है। शायद अगर ये नहीं होता तो इंडिया शायद कर चुका होता है। इंडिया तो आता ही तरक्की करते ही करता। ठीक है, अब जो हालात हैं ये, लेकिन हम शायद मुझे लगता है कि इससे भी महरूम होते, ठीक है, हम इससे शायद महरूम होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक और हैरत अंगेज़ बात, कई लोग जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, जो अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे, उन्होंने ज़िंदगी भर ट्रेन में सफ़र नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ये अंग्रेज़ यहाँ लाए हैं। अंग्रेज़ों से नफ़रत की वजह से कई अफ़गानिस्तान के, कई पख्तून ऐसे रहनुमा थे, कई बलूचिस्तान की तरफ से ऐसे रहनुमा थे जो ट्रेन में बैठना पसंद नहीं, जो सख्ती से मना कर दिया था कि हमने इनकी बनी हुई चीज़ पे बैठेंगे, यानी नफरत। अच्छा, ये गांधी जी वाला वाक़या भी आपने सुना कि इन्हें भी फर्स्ट क्लास से डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैं एक तरीके से देखूंगी कि रेलवेज भी था, चिनाब ब्रिज का भी, यानी कि ब्रिजेस वगैरह का भी जिक्र हुआ, रेलवे स्टेशन, कमलापति, हाँ, तो यानी कि जो भी डेवलपमेंट हुई है ना, उन सब के ऊपर थोड़ी थोड़ी नज़र डाली गई और वीडियो के अंदर उसको दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरीके से हाईलाइट्स थे, 170 साल पीछे गए, फिर देखा थोड़ा। अच्छा, मुझे वो सीन बड़ा दिल दहलाने वाला लगा, वो जो आपने देखा पार्टीशन के टाइम पे लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता। पार्टीशन के टाइम पे जो लोग हैं, उसमें ट्रेन ने बहुत किरदार अदा किया है। उसमें ट्रेन की वजह से अच्छा, किस तरीके से बिल्कुल खचाखच भरे चिपके हुए, मतलब है कि खून बहा भी हुआ है, बहुत लोग तकलीफें भी उठाई हैं। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल, 2.5 साल किस अफरा तफरी में गुजरे। मेरा घर वहाँ
दिल्ली छोड़ के आया हूँ, मुझे यहाँ मिल नहीं रहा, मुझे- मैं अपने सबूत दे रहा हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, मुझे यहाँ घर नहीं मिला, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, यहाँ के मंदिर छोड़ के लोग वहाँ गए, वहाँ की मस्जिदें छोड़ के लोग यहाँ आए, कई ऐसी चीज़ें होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तसव्वुर करें कि एकदम ऐलान हो जाए अब आपकी जगह नहीं है, अब आप चाहें तो उस तरफ जा सकते हो, तो अच्छा, ज़िंदगी बदली। मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ, अभी मैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल होकर सोच रही थी एक बात, वो ये कि अगर हम पिछले दौरों में जाएँ तो इंडिया बहुत बड़ा था, अखंड था और मुतहद था, और अफगानिस्तान अलग था, पाकिस्तान अलग था, बांग्लादेश अलग था, बहुत सारे श्रीलंका के साथ में तय है, तो तब इतना बड़ा इंडिया था। तो अंग्रेज़ आए, उन्होंने हुकूमत करी, प्लस गुलामी करवाई, उसके बाद इसको बांट दिया डिवाइड एंड रूल के तहत। तो मतलब बेसिकली वो खाइफ थे क्या इंडिया से कि इंडिया बहुत बड़ी सुपर पावर है या बहुत बड़ी एक कंट्री है जिससे हमें खतरा हो सकता है? मेन चीज़ ये है कि अगर कहीं से आप जा रहे हो वो आपका दुश्मन है, तो कम से कम आप दुश्मन को कमज़ोर ज़रूर करिए, या तोड़ोगे, कमज़ोर करना मतलब दुश्मन है हिस्से में बांट उनको टुकड़े कर दिया, 4 भाई आपके दुश्मन है तो उन 4 भाइयों को तो पहले लड़वा दो, उनके अंदर तो नफरतें पैदा, उनका इत्तेहाद खत्म होगा तो फिर हम किसी एक पे वार करेंगे तो वार करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, वो आपस में ही वार करते रहेंगे, लेकिन कमज़ोर तो हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, इतना उलझा के रख दो कि वो इधर तक ध्यान ही नहीं आएगा। देखिए आपको मसरूफियात चाहिए, परेशानियाँ चाहिए, आपको इतना रोज़गार में उलझा दो, आपको इतने कौमों में उलझा दो, मज़हब में उलझा दो, इतनी चीज़ें, तो आप उस तरफ तवज्जो ही नहीं दोगे असल दुश्मनी, और वो अपनी तरक्की करते अपनी तरक्की करते रहेंगे। उनका मकसद ये था कि कल को हमारे लिए दुश्मनी ना हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बात कहाँ से निकल रही है, दोबारा किसी मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।